Riding a bike in a group is not just an activity, it is an art. Art of showcasing strict discipline, art of following every traffic rules, art of respecting each and everyone on the road, art of increasing riding fraternity and brotherhood. और इसी वजह से जब एक राइडिंग ग्रुप रोड पे निकलता है तो वो बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ रोड बन जाता है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में बहुत सारे राइडिंग ग्रुप्स हैं जो आए दिन ग्रुप राइड्स करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसे राइडिंग ग्रुप्स एक साथ कोई राइड प्लान करते हैं तो ऐसी राइड का मज़ा ही कुछ और होता है। पिछले रविवार के दिन ऐसी ही एक ग्रुप राइड हुई एंड नंबर ऑफ राइडर्स हु जॉइंड द राइड वेर मोर देन 150। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लाइक वी ट्रैवल में। मैं हूं आपका दोस्त पार्थ राणा। आज की डेट है 1 अक्टूबर 2023 और ये आप पीछे देख पा रहे हो सारे बाइक्स हैं। तो बेसिकली आज एक ब्रेकफास्ट राइड है। अहमदाबाद से जा रहा है गांधीनगर। तो सभी राइडर्स अभी इकट्ठा हो गए हैं। जाइडस हॉस्पिटल के जस्ट सामने है अभी। यहाँ से राइड कुछ ही देर में स्टार्ट होगी और गांधीनगर द रॉयल किंग्स करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाने वाला है। तो करीबन 200 राइडर्स आज इकट्ठा होने वाले हैं। वहाँ पे सबका गैदरिंग होगा, तो सब लोग मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पहली बात, यहाँ सब मार्शल्स हैं, मार्शल्स को सब फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ से जाने के टाइम पे जो भी रोड आ रहा है कोई आगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने दौड़ेगा नहीं। वी हैव ऑलरेडी अ टीम सेट फॉर इट। वहाँ जाके पूरा ब्रीफिंग होगा। वी हैव द स्पॉन्सर ओवर देयर, वी वेलकम द स्पॉन्सर, दे विल गिव द ब्रीफिंग, देन वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट, देन यू ऑल आर फ्री फॉर द नेक्स्ट राइड वेर एवर यू वांट टू गो। एनीथिंग एल्स? सो लेट्स राइड अप, कम ऑन गाइस। Good. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times. सो इट्स 8 AM और पहुंच गए अभी द रॉयल किंग्स फैमिली रेस्टोरेंट जो यहाँ पे गांधीनगर में। वहाँ पे पार्थ, कैसी रही बाइक? बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही मज़ा है ना। हम मीडिया सेल में थे। हाँ, हम लोग मीडिया सेल में थे, मतलब हम लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करना था, तो ये भी एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही मज़ा आया। मैं, चिराग भाई, पार्थ, हम लोग साथ में सभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यश भाई थे साथ में, दुर्गेश भाई थे। सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। और करीबन 200 राइडर्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सब यहाँ पे अभी गैदरिंग है सबका और आगे इवेंट स्टार्ट होगी। तो पूरी अभी आपको इवेंट दिखाता हूँ। इससे पहले ये जो रेस्टोरेंट है वो भी आपको दिखाता हूँ। I like to do it 'cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. So, as Bapu has told me to take the mic, so not much a public speaking person, but since the event is about riding, so let's call Castrol and Eurogrip to introduce themselves each. They are from TVS and there is a team of Castrol also after this. They will be showing their products and giving the brief details of the event and products. Please sir. चक्रा लिमिटेड ये TVS यूरोग्रिप प्रोडक्ट का नाम है और मैं अरविंद खत्री क्लस्टर हेड हूँ गुजरात का और हमारे जोनल हेड है मिलन सरवैया, हमारे सौराष्ट्र के हेड है सुखदेव सिंह आलूवालिया और हमारे ये ब्रांडिंग के जो हेड है प्रशांत करके। बेसिकली TVS यूरोग्रिप जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा आपका 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इंडिया का सबसे पहला स्टील वेल रेडियल है जो TVS यूरोग्रिप ने मार्केट में लॉन्च किया है। In a very short, I will explain about Castrol. Thank you for listening to me. Thank you for joining this ride. Starting with Vishal. Thank you so much. My name is Vishal Beni. I am founder member of Gun Riders Motorcycle Club, and I would really like to thank everybody who joined Sunday morning, taking out time to join us for the ride. And you can enjoy the breakfast. Thank you very much, everyone. Thank you. जैसे कि इन्होंने बताया कि there was a contest for TVS Eurogrip. So Mr. Rana is a winner for a day. Congratulations to you. शांति से जितना अच्छी तरह से आए थे वैसे ही जाना। Thank you. तो TVS यूरोग्रिप से हमारे साथ रविंद्र सर और हार्दिक, थैंक यू वेरी मच। और सर ने अभी मेरा चैनल पूछ के सब्सक्राइब भी किया है, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो व्हाट अ वंडरफुल इवेंट इट वाज। आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। स्पेशल थैंक्स टू कैस्ट्रॉल, TVS यूरोग्रिप, द परफेक्ट राइडर्स एंड द रोड जर्नी जो हमारा राइडिंग का ग्रुप है, उन सबको थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।